हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक साइंस का क्लास 10 विच इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन विच इज़ बेसिकली अ फिजिक्स टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्ट करने के लिए पहले कुछ बेसिक जानकारी लेना होगा। सबसे पहले आपको वेव के बारे में कुछ जानना हो, कुछ पार्टिकल्स के बारे में जानना होगा। वैसे हमारा लाइट जो है वो एक वेव के रूप में चलता है और कभी कभी पार्टिकल के रूप में चलता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको पहले क्या होता था कि पहले के लोग उसको वेव मानते थे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जो प्रूफ करते थे कि लाइट एक मैटर पार्टिकल्स है। तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्योंकि लाइट कोई एक चीज़ है, उसको हम वेव और मैटर पार्टिकल्स दोनों नहीं मान सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आया जिसमें हमने प्रूफ किया कि जो लाइट जो है वो वेव और मैटर पार्टिकल्स दोनों है। सो आज हम क्या देखते हैं कि कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनको प्रूफ करने के लिए हमें उसके एक वेब वेब नेचर को मानना ज़रूरी है। और कुछ ऐसे पार्टिकल हैं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिसे प्रूफ करने के लिए हमें उसके मैटर पार्टिकल्स का मानना ज़रूरी है। सो आज हम शुरू करते हैं लाइट के बारे में। रेडी गाइस? नेम ऑफ आवर चैप्टर इज लाइट, reflection and refraction. Now, first of all, what is light? So light is a so हम बात करेंगे लाइट के बारे में। What is light? So light क्या है? Light is anything. Light is a thing which makes other thing visible. So आज क्या है कि हम जो भी अपने वातावरण में जो भी चीज़ देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि हम जो है लाइट जो है उस चीज़ को रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख तक आती है और हम क्या करते हैं, उसको देख पाते हैं। अगर ऐसा ना हो सके तो फिर हम दुनिया में जो कुछ भी चीज़ है उसको नहीं देख पाएंगे। देखने के लिए लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। नाउ we have discussed about the dual nature of light. So dual nature of light, that light has two properties: number one, wave nature; number two, matter particle nature. And after that we will study about properties of light. Properties of So what are the main property of light? First of all, recall yourself. Now I am going to tell about it. Property of light number one, that light always travel in a straight line. Light always travel in a straight line. Now another property is that light does not require any medium to travel. जैसे साउंड जो है, साउंड भी एक वेव ही है, वही वेव नेचर का होता है, लेकिन it requires any medium to travel. So if there is not any medium, so let example of air. So you know that in air there are thousand numbers of air dust particles, thousand numbers of another metallic particles, some gases are there. So they made a medium for the travel of sound. So we can hear the sound of another people from some distance. But in light there is no need of any medium, and this is the reason that the sunlight comes to our earth. If the light requires medium for the transportation, so the sunlight cannot reach our earth. So second property, that light doesn't require medium for transportation. Number three is that लाइट को अगर हम किसी वैक्यूम में ले जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका स्पीड ज़्यादा होगा, और अगर लाइट को हम किसी ऑपेक्यूम मटेरियल में ले जाएंगे तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम जितना ज़्यादा डेंस करेंगे मीडियम को, उतना स्पीड लाइट का कम होता जाएगा। सो बेसिकली rarer the medium
as rarer is the just opposite word of denser. So rarer the medium, speed of light will be more. Okay, now लाइट का बात तो हो गया, अब हमें बात करना है रिफ्लेक्शन के बारे में. सो नाउ आवर टॉपिक इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन, सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज द रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है कि वो लाइट का जो रे है वो किसी सरफेस पर से वहां से वो रिफ्लेक्ट करता है. सो मतलब लाइट जो है, मान लीजिए कि अगर ये सरफेस है, ये एक सरफेस है, यहाँ पर कोई लाइट अगर ऐसे आ रहा है तो वो ऐसे जाता है, ठीक है. तो उसमें रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. नाउ देयर आर मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन which we have to read about it. So there are basically two laws of reflection. There are two laws of reflection of light. First of all, the first law of reflection is that angle of incidence is equal to angle of reflection. Now what is angle of incidence and what is angle of reflection? So इसको समझने के लिए हम इधर आते हैं. जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि ये एक लाइट इस सरफेस को स्ट्राइक किया और इसके बाद ही रिफ्लेक्ट हो गया. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये सरफेस है, इसके 90 डिग्री पर एक नॉर्मल आते हैं, 90 डिग्री कोण पर एक नॉर्मल आते हैं. सो दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल. And this line is called incident ray, and this line is called reflected ray. बेसिकली लाइट जो है वो सरफेस को स्ट्राइक किया है इस पाथ से और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट किया है. सो हम क्या करते हैं कि जो इंसिडेंट रे ये हो गया और ये हो गया नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से. सो इट इज बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड जो ये एंगल है ये होता है एंगल आर विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर से. सो द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और गाइज ये जो है ये लॉ जो है ये किसी भी कीमत में फॉलो होगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, प्लेन मिरर हो, एनीथिंग, ये लॉ जो है वो फॉलो करना पड़ता है, वो फॉलो होगा ही होगा. नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 जो लॉ है वो क्या है कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल and reflected ray all are in one plane. तो इस लाइन का मतलब क्या है? तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये एक प्लेन है, जो एक जिस सरफेस पे लाइट ने स्ट्राइक करा वो एक प्लेन है. उस पर तो हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन ऑफ इंसिडेंस है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, लाइन ऑफ नॉर्मल है इसको नॉर्मल बोलते हैं, और लाइन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. तो ये तीनों बेसिकली एक ही प्लेन पर है, एक ही प्लेन पर होता है. ये सेकंड लॉ है. ये सेकंड लॉ का एप्लीकेशन हम आगे देखेंगे कि इसका क्या उपयोग है. जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो बेसिकली सेम प्लेन पर होता है. सो दीज आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ आई एम गोइंग टू फर्दर teach you. After that we have to study mainly about mirrors. Now what is mirror? मिरर क्या है? तो हम जो अपने डेली के दिनचर्या में यूज करते हैं मिरर अपना चेहरा देखने के लिए, वो क्या है? वो मिरर है.
तो जो हम डेली यूज करते हैं वो क्या है, वो प्लेन मिरर है, ठीक है। सो मिरर there are two types of mirror basically, plane mirror and there are two types of mirror, plane mirror and spherical mirror. Plane mirror and spherical mirror. Now, so first of all, you can write the definition of mirror as the instrument which is used to make the light bounce back in a specific direction is called mirror. So there are two types of mirror, plane mirror and spherical mirror. So plane mirror क्या होता है? प्लेन mirror का जो मेन जो है जो कंडीशन है वो ये है कि वो जो है नॉर्मल के 90 डिग्री होता है। बेसिकली मतलब ये है इसका कि आप जैसे देख सकते हैं कि ये एक प्लेन मिरर मतलब है कि आपका सरफेस जो है वो पूरे फ्लैट होगा, ठीक है। पूरे फ्लैट होने का मतलब हो गया आपको प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर में दो टाइप होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। As the name suggests, spherical mirror, it means that these both mirror are a part of sphere. So here you can see that you take a sphere here, okay. Now what you do, cut a part of this, okay. If you cut a part of this part, we will cut it from this sphere, this part, so it will become like this, okay. It will become like this. So in this way we can see that, so this will become what? This will become concave mirror. Now if our light is coming from, this side, it will become concave mirror. So if light is coming from this side, then we have to certainly, what we have to do, we have to block the light to pass from one side. So इसकी light will come here and it will reflect. So for reflecting, what you have to do, well, we have to block one side from mirror, which is normally done by silver or aluminium, you know it. It is done by silver basically, because silver जो है वो 99.9% light को reflect करता है. So silver is the best reflector of light, so we use silver as a obstructor metal here to obstruct the passage of light. So this is this is concave mirror. So concave mirror basically it is converging mirror. Now why converging mirror? You can see that if this is your fist, and you can see that if this is fist, then this side is converging. So this is used to converge anything. So this type of structure will give concave mirror, and just opposite side of this. So if anything will fall on this side, so we cannot converge it. It will diverge in any direction. It can diverge in any direction. So this is diverging. So diverging, we just opposite. Suppose this, and if we put silver on this side, what will happen? And we incident light on this side. So what will happen? The light will scatter down. The light will diverge. So it is called divergence. Sorry, it is called diverging mirror. It is called diverging mirror. So this is concave mirror. This is convex mirror. So we will further talk about it in next some time. Now I am going to first of all detail about plane mirror. Okay. Plane mirror. In plane mirror, first of all, this is plane mirror. This is the side of reflection, and this is the side of obstruction. This is the side of obstruction because the light cannot pass through this side, and we have apply a silver on this side. Okay, so light will come on this side, and it will pass on this side. So this plane mirror will certainly obey the rule of reflection. It will certainly obey the law of reflection,
because angle I will be equal to angle R. I know there are some special property of plane mirror. First is that their image will be always virtual and direct. Now here our new word comes, that what is image? You know what image in daily language, but here the definition of image is some different. Okay, the definition of image is that image is any point where two or more two or more reflected rays meet. So you know about image in daily language, but this is another definition. Image is any point where two or more reflected rays meet. So you can clearly see that here, if any incident ray is falling on this mirror, so it can only meet behind the mirror. It cannot meet on the that side of mirror from which incident ray is striking. It can only meet on behind the mirror. So their image will always be what? Their image will be always virtual and direct. Now there are two words here, virtual and direct. What is virtual? You know, virtual means not real. Just opposite word of real. Opposite of real, not real. And direct means सीधा. It will be just as me. So suppose I am seeing my face in the mirror. So I will be my head on the upper side, my leg on the lower side. It cannot get inverted. In inverted, what happens? In inverted, my leg will become on the upper side and my head will become on the lower side. But in erect, what happens? In erect, my head goes on the upper side. It means my image is just like me. Image is just like me. So it is called virtual and direct. Now there are also some more property of plane mirror, that the size of image the size of image will be equal to size of object. So if you go to see your image in plane mirror, you can never see that it will change your size. The size of the image will always equal to size of object. And now it is covered the plane mirror. Now I am going towards the spherical mirror. For understanding spherical mirror, we have to understand first of all some terms. So spherical mirror, you see that some earlier that there will be a sphere, and we have cut an arc from a sphere to make a spherical mirror. So certainly there will be a center of that sphere, which is called here center of curvature. So so center of the sphere will be called center of curvature. Now you can see that this center of curvature, it is only imaginary thing. So we can find, but there is not any real use of center of curvature here. Now number 2 is radius of curvature. So here basically in this picture you can see that if we join the
center of curvature with any point on this arc, it will this distance will become what? This will become radius. So it is so this will become radius of curvature. And now there is some more. So the point of, so the third term is pole. What is pole? Pole is the point of intersection of this radius of curvature. एंड मतलब बेसिकली एक चीज और देखना पड़ेगा कि पोल जो होता है, व्हाट इज पोल? सो पोल इज द, सो ये जो आर्क है, इस आर्क के बीचों बीच हमने एक पॉइंट को डिसाइड किया है, वो क्या है? वो है पोल. सो ये दिस इज सो द लेंथ ऑन दिस साइड एंड लेंथ ऑन दिस साइड विल बी सेम. सो दिस इज कॉल्ड पोल. एंड ऑल टू दिस लाइन कॉल्ड this line. So there can be infinite line connecting this mirror to the center of curvature. Here. There can be many lines. There can be many lines which connect the mirror with the center of curvature. But we decide the pole. First of all, if we decide the pole, then the axis will be decided. So this principal axis will be constant. So hence this is called principal axis. Principal axis. Why do you call principal axis? Because we have decided the firstly pole, and now the line joining the pole with the center of curvature will be only principal axis, not any other line principal axis. Okay. Now here are more terms, that aperture. Aperture. What is aperture? So you know this is a mirror, spherical mirror, which is basically it is convex mirror. You can see here clearly that this is diverging. So if any rays comes from this side, obviously rays can come from only this side. Rays can come from this side. Okay, because this is blocked. So rays can only come from this side, and if any rays come from this side, it will converge only. It will converge only. It cannot. It will diverge only. It cannot get converged. So this is convex mirror. Now in this you can see that the length of this point to this point, this is called aperture. So this is called aperture. Aperture is important for our discussion here. I can give you some reason. After that, there are some principle of focus. So what is principal focus? So if you technically want to understand the definition of principal focus, it is basically the half of radius of curvature. So if we get the half of this distance, we will find the principle of focus, which is denoted by small f. Okay, center of curvature will be denoted by capital C, pole will be denoted by capital P, and radius of curvature will be denoted by capital R. Capital C, pole will be denoted by capital P, it will be denoted by small f. Okay, so this is the abbreviation of these things. Now we can do some experiment from a spherical mirror. So now there are two types of mirror. You see that this is convex mirror, and if we make just opposite, if we make block on this side and we make a open on this side, if we make open on this side and block this side, it will become convex mirror, just opposite. So now proceeding to the next point, that is that first of all we have to take some assumption. Assumption is that, number one assumption is that the length of curvature should be very small. Should be very small as compared to radius of curvature. So हम कोई भी अगर स्फेरिकल में बनाते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो लेंथ ऑफ कर्वेचर हो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए.
it should be very small. Okay. Now proceeding to our main discussion topic here, we have to see the image formation of some spherical mirrors, which is convex mirror and concave mirror. So there is some image formations of both mirror. I will give you some table also. Number one is concave mirror. Concave mirror. Now we have to see some. First of all, we will see some property of concave mirror. So some property. Number one property is that if this is a concave mirror, this is a concave mirror. Okay, this is principal axis. This is pole. This is center of curvature, and this is principal focus. So if any light comes from infinity, so first of all you have to keep something in mind that if the object is on infinity side, if the object is on infinity distance, then the rays coming will always be in parallel. Then the rays coming will always be parallel. Okay. So suppose the object is on this side, so rays will always come to parallel, and after coming parallel, they will certainly follow the law of reflection and got reflected to come at focus only. So any parallel rays, which is basically parallel to the principal axis, always come to the focus. I am saying that it is parallel to principal axis. It is not compulsory. If any light है, मान लो कि लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक है, लाइट मान लो कि ऐसे आ रहा है दोनों आपस में, तो ये भी तो पैरेलल है, इट्स आल्सो पैरेलल. So it will also, suppose it's a focus and it's a radius, so it will also get converted to like this, that they will form image at what? They will form image at focus only. They will form image at focus. So if any parallel lines are coming from infinite distance, they will certainly make the image at focus. Okay. First this property, first property. Now just reverse. Suppose any object is put at focus. So what will happen? Just reverse. The light will come from focus to the mirror, and it will just go parallel to the principal axis. So reverse also true here. If a light is coming from infinite distance, which is parallel to principal axis, then they will meet at, obviously they will converge at focus and will make image at focus, which will be very diminished. Again, if an object is put at focus, then the light will go to the mirror and they will form image at infinity side. Okay. Now there are also some simple, if suppose if light is coming on principal axis, okay, on principal axis, this is pole. So if light is coming on principal axis, so what will happen? Light will get reflected on principal axis. Okay. So light is coming on pole through along principal axis, so it will also reflected through principal axis. Okay. What here is here? You can clearly see here that the angle of reflection, the angle of incidence, here is 90 degree. Okay. Angle of incidence here is 90 degree. Sorry. The angle of incidence here is 0 degree. Angle of incidence here is 0 degree. So the angle of reflection will also be 0 degree, because here the normal is the same. This is principal axis will also always normal, because you know the property of circle that if any circle then if any tangent is passing through this point, then the radius and tangent makes always 90 degree. So this will make always 90 degree, and so the angle of incidence will become 0. So angle of reflection will also be 0. So the light will pass through the center of curvature. Now we will see the image formation of convex mirror. Okay, concave mirror, and we also see the properties like
magnification or diminution means size comparison, means compare size of object and image. Compare size of object and image. Now also we will see the nature of image, so and also the location of image. Or we also see the location of image. So I am giving you a table which is NCERT. I will not give you a table. It is NCERT book. You can read the NCERT book. So I will give you some explanation of that. Suppose this is convex mirror. Okay. So here certainly we center of curvature here, focus here, and here we pole. So if any object is kept at infinity, you know that the image will be found at where? Image will be found at focus, and surely it will be diminished. Okay. Now, if the object is kept at beyond center of curvature, but not very beyond, because if it is very beyond, then it will become infinity वाला case. So ये कौन सा केस है? ये beyond center of curvature का केस है. तो कहाँ बनेगा? So अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो सर्टेनली ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा यहाँ, which will be real and inverted. Okay, which will be real and inverted. Now real and inverted, and also what? It will be smaller in size, diminished. So अगर हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारा इमेज बनेगा कहाँ? Between center and curvature, between center and focus, and it will be diminished in size. We can see here clearly see it is real and inverted. This is called inverted image. Okay, because it is real and inverted. Why? So you can learn that if any image is real, it will be inverted. In upper classes, you can see that there are many cases also where this is not true. But here you can learn that if any image is real, it will be inverted, and if any image is virtual, it will be erect. बस इतना लो, बस इतना रख लो बस. उसका नेक्स्ट जो है सिनेरियो क्या है? सॉरी नेक्स्ट सिनेरियो है कि हमारा कॉन्केव मिरर जो है उस पर ऑब्जेक्ट है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फोकस, और ये पोल. तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बढ़ा देंगे. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बढ़ेंगे तो क्या होगा बताओ? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहें तो हम कुछ देर पहले ही देखे थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनता है. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगा, ये फिक्स है. एंड इट विल बी सेम साइज object. The size of image will be same as that of object. Now next scenario is that it is center of curvature and its focus. If we put the object at between center of curvature and focus, so what will happen? The image will be found beyond center of curvature, and it will be enlarged. Okay. It is all means you can make here this type of. So this is all real and inverted. This is enlarged. Real and inverted. उसके बाद क्या करेंगे हम? नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं. नेक्स्ट सिनेरियो क्या है?
कॉनकेव मिरर है, ये आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। सो नेक्स्ट टाइम हम फोकस पर रखते हैं ऑब्जेक्ट। सो अब क्या होगा बताओ, मैं बताया था कि अगर हम फोकस पर रखते हैं ऑब्जेक्ट तो क्या होगा कि जो यहाँ से इमेज निकलेगा वो सीधे कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे। यहाँ से इमेज निकलेगा वो सीधे जाएगा इन्फिनिटी पे, मतलब हमारा जो इमेज है वो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब हो गया इनलार्ज, इट विल बी इनलार्ज एट इन्फिनिटी, इनलार्ज एट इन्फिनिटी एंड रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर अगर जिस साइड से इंसिडेंट रे आ रहा है अगर उस साइड इमेज बना है तो इट विल बी रियल ऑलवेज, इट विल ऑलवेज रियल। और अगर वो मिरर के अंदर बना है तो इट विल वर्चुअल, ये फिक्स है। आप ऐसे याद रख लो कि जो मिरर है उसमें जो इंसिडेंट रे साइड पर जो अगर इमेज बन रहा है तो इट विल ऑलवेज बी रियल, और अगर उसके अंदर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो इट विल ऑलवेज बी वर्चुअल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा केस है बस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये गया फोकस। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फोकस और सेंटर फोकस और पोल के बीच रखते हैं, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल तो क्या होगा, सो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज जो है वो यहाँ बनेगा कुछ। सो दिस इज ओनली सिनेरियो ऑफ कॉनकेव मिरर where the image is forming virtual and erect. So your image is what, दिखने लगा शायद, so इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको देख लो। इसका सिनेरियो क्या होगा, उसमें इमेज जो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, उसके बाद इट विल बी इनलार्ज्ड, इट विल बी इनलार्ज्ड एंड देखो क्या था, वर्चुअल इरेक्ट इनलार्ज्ड, बस वो इतना ही था। हाँ, दो ही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और इनलार्ज, बस ठीक हो गया आपका ये। सो गाइस अब हम देखें कॉन्वेक्स मिरर का केस। सो हम कॉन्वेक्स मिरर के आंसर पे जानेंगे, कुछ उसका प्रॉपर्टीज का आंसर पे जानते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो होता है कुछ ऐसा होता है वो। तो हम देख सकते हैं कि जो जिस साइड हमारा रे आ रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है, उस साइड ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना ही फोकस है। सो यहाँ पर उतना सारा सिनेरियो नहीं बनने वाला है क्लियरली, यहाँ पर सिर्फ दो सिनेरियो बनेगा, या फिर तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर होगा, या फिर तो हमारा वो मिरर के नजदीक होगा। पहले हम प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि ये जो है, जो भी हमारा रे है, इंसिडेंट रे वो आ रहा है जो, तो वो आने के बाद क्या होगा, वो डाइवर्ज होगा, ये तो जानते हैं डाइवर्ज हो गया वो, ठीक है। जो क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये तो मान लो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसको भी फॉलो तो करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, मान लो कि ये ऐसे आएगा तो यहाँ नॉर्मल होगा कुछ, तो ऐसे आके रे बाहर आएगा, ठीक है, ये रे ऐसे बाहर आएगा। लेकिन यहाँ होगा क्या, अगर हम बाहर में बैठे हैं, मान लो कि हम इमेज लेने के लिए बैठे हैं इसका, तो हमें पता क्या लगेगा, हमें लगेगा कि जो ये इमेज जो है कहाँ से आ रहा है, पता है, ये इमेज जो है फोकस से आ रहा है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया। सो हम अगर बाहर बैठे हुए तो हमें सिर्फ लगेगा कि जो इमेज है वो कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। सो इमेज कैसा होगा यहाँ पर, ये वर्चुअल होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला था इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड इमेज। सो यहाँ पे कि रिफ्लेक्टेड रे को हमने स्टैंड किया तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में, तो ये क्या हो गया, ये फोकस। सो इसी कॉल्ड फोकस, एंड ये इसका एक प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके यहाँ पर रिवर्स भी होगा, अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर रिवर्स दिखा नहीं हो सकता है। रिवर्स क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रख ही नहीं सकते हैं, इसको किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर रिवर्स केस नहीं होगा। तो इसके हम इमेज परमिशन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, इमेज परमिशन। दो ही सिनेरियो है बस, नंबर एक तो देख ही चुके हैं बेसिकली, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो मैंने पहले ही बोला आपको
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर रखा है बहुत दूर, तो उससे लाइट कैसा आएगा, उससे रे कैसा आएगा, इंसिडेंट रे ऑलवेज बिकम, ऑलवेज रे आएगा पैरेलल। तो ये क्या होगा, यहाँ के डाइवर्ज हो जाएगा सीधा, डाइवर्ज डाइवर्ज डाइवर्ज, और कैसे डाइवर्ज होगा, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। सो इट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। ओके, नाउ सेकंड सिनेरियो क्या है, सेकंड सिनेरियो है कि वो इन्फिनिटी पर नहीं बल्कि कुछ फिक्स डिस्टेंस पे यहाँ से आ रहा है, फिक्स डिस्टेंस में कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, कहीं भी इसके नजदीक रखा हुआ है अगर, तो इसका जो है, इसका मान लीजिए फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसका जो इमेज बनता है वो यहाँ बनता है, कुछ फोकस के अंदर बनता है, फोकस के अंदर, और डिमनिश बनता है। ठीक है, डिमनिश तो अब जैसे मान लो कि मिरर के बिहाइंड हो गया तो क्या हो गया, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। तो अगर इसका लोकेशन लिखेंगे तो हो जाएगा बिटवीन पोल एंड फोकस, और इसका हम साइज लिखेंगे तो हो जाएगा डिमनिश मींस the size of image will be smaller than, diminish means हो गया size of image will be smaller than that of object, और enlarge में तो क्या होगा, size of image will be longer than that of object, और virtual इरेक्ट तो आप समझ ही गए हो। तो ये और क्या, सो ये कॉन्वेक्स मिरर का भी इमेज प्रोसेसर हो चुका है। यहाँ पर दो ही केस था तो सीधा सिंपल। So guys, अब हम देखेंगे यूजेज ऑफ दिस मिरर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर्स। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर्स, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स में फर्स्ट में क्या आ जाएगा, सो कॉनकेव मिरर हम देखा कि इसका काम क्या है, कन्वर्ज करना। सो कन्वर्जिंग आप जहां भी देखते हो, जो भी देख रहे हो कन्वर्जिंग, जो भी काम हो रहा है, जैसे हमारा टॉर्च है, टॉर्च में क्या होता है कि टॉर्च में जो लाइट होता है वो बेसिकली वो हर एक डायरेक्शन में निकलता है, लेकिन वो उसके अंदर क्या होता है, एक कॉनकेव मिरर लगा होता है, वो क्या करता है पूरे लाइट को एक कन्वर्ट करके एक बीम आ जाता है। सो इसमें क्या होगा, हम लिख सकते हैं टॉर्च हो गया आपका, जो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसका भी सेम काम है। जो मतलब जो भी कन्वर्जिंग वाला काम जो भी है वो इसमें आप जैसे, इसमें आप और डाल सकते हो, इसमें आप सोलर फर्नास से डाल सकते हो, सोलर कुकर डाल सकते हो। इस समय क्या है, इस समय जो है सनलाइट को जो है हम क्या करते हैं, सनलाइट को हम पूरे अच्छे से कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम फोकस करते हैं एक पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर जो है टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वैसे वैसे क्या है, वैसे पूरे सनलाइट स्कैटर्ड है, तो हम क्या करते हैं उस पूरे लाइट को पूरे फोकस करते हैं जगह पर, उससे क्या होता है वो पूरे हीट एनर्जी जो है एक जगह फोकस होता है, और वहाँ पर हम कुछ भी पका सकते हैं और उसको हीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हो जाता है आपका कुछ जो डेंटिस्ट हैं, अब मान लो कि जैसे हमने एक केस देखा था कि जो अगर हम फोकस पर कोई चीज रखते हैं, अगर फोकस पर रखते हैं अगर ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, और वो क्या होता है लार्ज, हाईली इनलार्ज होता है। इस कारण से डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज इट एज मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम इसके फोकस पर रख दें तो इमेज जो हमारा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, विच विल वेरी इन लार्ज, तो उसे देखने में आसानी होगा। मान लो कि अगर हमारे दांत के अंदर कोई छोटा सा चीज देखना है, उसमें क्या करेंगे, उसको इलाज में कैसे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। अब देखेंगे यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आता है आपका जो भी रेयर लाइट होता है। अब रेयर लाइट क्या होता है, आप देख सकते हो, रेयर लाइट या फिर इसको साइड लाइट बोलते हैं, साइड लाइट हो सकता है, आप साइड लाइट जानते हो, साइड लाइट। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे व्हीकल के बगल में जो एक मिरर लगा होता है, वो कि उसका पर्पस क्या होता है, वो उसका पर्पस होता है कि हम पीछे से जो हमारी गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए वो मिरर लगा होता है। तो हम क्या करते हैं, तो इसी उस मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। क्यों कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर बहुत सारा कारण है। सबसे फर्स्ट कारण जो है, फर्स्ट अगर इसमें अगर रीजन पूछा जाता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पुटिंग कॉन्वेक्स मिरर इन रियर लाइट, उसमें रीजन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन क्या होता है,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि इमेज जो है कैसा आता है उसमें, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सो अगर इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट आ रहा है सो देयर इज नो चांस ऑफ कंफ्यूजन। नंबर 2 में होता है कि वाइडर रेंज ऑफ व्यू। मतलब क्या है कि हम इतने छोटे से मिरर में पूरा का पूरा बहुत पीछे बहुत सारी गाड़ी आती रहती है उसको हम देखते हैं। सो ये एक मेन काम है कॉन्वेक्स मिरर का। और बेसिकली इसका यूज करके जो एक आगरा फोर्ट का इसे एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि आगरा फोर्ट में जो है वहां पर एक मिरर लगा हुआ है, छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें कि पूरा का पूरा ताजमहल दिखता है। वो कैसे दिखता है, वो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो वाइडर रेंज ऑफ व्यू प्रोवाइड कराता है। सो आज का लेक्चर यही था बस। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी सेम चैप्टर का। ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि 2-3 लेक्चर बन जाए, तो 3 लेक्चर तो बन सकता है और क्वेश्चंस का अलग से लेक्चर बनेगा। सो थैंक यू गाइस, स्टे सेफ एंड हेल्दी, थैंक्स।